Hello children, class 9, chapter 1, exercise 1.3. The first question, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion. Now the first question is 36 upon 100. 36 upon 100. हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है, 2 0 है तो 1 2 के बाद पॉइंट एंड 0, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया है, मगर कौन से विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन? डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता, खत्म हो चुका है, और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, कोई डेसिमल 36 के बाद 36 के बाद कोई भी नंबर नहीं रिपीट होगा, तो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड द अदर फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के हैं, टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग repeating number. It means 0.363636 रिपीट हो रहा है, हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? 0.36 बार। किसी नंबर में 3636 रिपीट होता जा रहा है तो वी गोइंग टू से दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. Now the second form, this is the first form. Now the second is non terminating non repeating number. इसमें 0.36781479, the different digit will be come. So this kind of number we say non terminating non repeating number. Now which kind it is? This is terminating, क्योंकि ना रिपीट हो रहा है और खत्म हो चुका है, तो terminating decimal expansion. Now the second is 1 upon 11. 1 upon 11 we show in division form. 11 नीचे है तो अंदर आएगा, 1 यहाँ. It not possible, will take 11 will come here क्योंकि डिवीजन फॉर्म में है और ये न्यूमरेटर फॉर्म वाला अंदर आएगा. 11 इज ग्रेटर देन डिविडेंड 1 से बड़ा है तो 0.0. स्टिल 10 इज स्मॉलर, तो विल टेक 11 zeros are 0. Subtract again 0, 10 will come. Now we'll take at 0. 11 9s are 99. Subtract 10 में से 9 जाएगा 1 0. Again 1 is coming, तो again 1 is coming, it means again 0. 11 zeros are 0 minus again 10 will come. We're going to take 1 0 क्योंकि डेसिमल के बाद हम 0 ले सकते हैं. 11 9s are 99 minus again 1 will come. Again we're going to take 0. 11 zeros are 0 minus 10 and again 1 0. 11 9s are 99, again 1 will come. Now this is 090909 is repeating, so we going to say
1 upon 11, the decimal form of 1 upon 11 is 0.09. It means this 09 is repeating. So we are going to say it is non-terminating, repeating, non-terminating, repeating decimal expansion. Now क्वेश्चन थर्ड, इट इज गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में कर लेंगे. मीन्स 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 अपॉन 8. 8 4 सा 32 और 32 प्लस 1 33 upon 8. Now it came in fraction form. Now we are going to show in division form. 8 will come as a divisor and 33 will come as a dividend. Now in 8 table it going to come in 8 4s are 32, subtract 1 will remain. Now put decimal, take 1 0, 8 1s are 8, subtract 2 will come. Now we'll take 0, 8 2s are 16, subtract will get 4 0, 8 5s are 40. Finish. We got remainder 0. It means 4.125. Which type of decimal expansion it is? Terminating decimal expansion. Now the fourth one, that is 3 upon 13. It is in fraction form. We will show 13 will come out and 3 will come as a dividend. 0.0. 13 2s are 26, subtract remain 4. Now 0, 13 3s are 39, 40 minus 39 remainder 1, carry 0. Now 13 divisor is bigger than dividend, so 13 zeros are 0, subtract remain 10. Now we'll take 1 0. Now 13 7s are 91. Now 100 minus 91 we will get 9 0. Now 13 6 are 78, subtract 10 minus 8 2, 8 minus 7 1. Now 0. Now 13 9s are will get 117, subtract the remainder is 3. Again the same dividend we got. It means that again 2 3 0 7 6 9 again it going to repeat. It means 3 upon 7's decimal expansion 0.2307669. These numbers are going to repeat. तो मैं इसके ऊपर बार डाल दूंगी. बार मीन्स द बार इंडिकेट दैट कि दिस सेट ऑफ नंबर अगेन गोइंग टू रिपीटेड. तो विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इट इज? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग decimal expansion. Now fifth sum, that is 2 upon 11. Again divided, denominator is 11, numerator is 2. It is not possible, so 0.0.
0. 11 ones are 11 minus 9 will remain 0. 11 eights are 88. Subtract 2 will remain, again take 0. 11 ones are 11. Now again 9 will come. The same thing again started. 0, 11 eights are 88 minus 2, 0, 11 ones are 11. Again 9 will remain. It means 2 upon 11 is decimal expansion is 0.181818. It means 1818 is repeating. So I am going to write it in 0.18. 18 is repeating. So which type of it is? This is non-terminating repeating decimal expansion. Thank you, children.